वो तो बहुत सारी पब्लिक है, वरना यहाँ इतना डर लगे ऐसे जंगलों में इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच। Guys, these are sacred lotus plants. So crazy. Nuhane. Lui hamo kung tikinya. It was amazing, but it's super chilly, and more than chilly, it's that my back is hurting so much, like my neck area and my shoulder blades, because yesterday I got 3 hours of sleep. Day before yesterday I got 5 hours of sleep. I was working 12 hours a day, and day before that as well I was working 12 hours a day. So it has been hectic and my back is killing me, so I have to go back to hotel, rest my back for some time, and if I feel like I'm feeling okay, then I will go to Old Port. I really wanted to do the Ferris wheel, but we'll see. It's all about my back right now, because going back to the hotel is like 40 minutes. So let's see. Streets of Montreal. I wish I was here for more days, so ज़्यादा मज़ा आता, बट एक दिन में भी मतलब मुझे प्यार हो गया इधर से. मेरे को ऐसा लगता है मुझे इधर मूव करना पड़ेगा. अगर मैं इधर मूव कर गई मज़ा आ जाएगा. But it depends also, like maybe I'm gonna miss Toronto when I stay here and it's just a vacation, and that's why I'm feeling so excited. But it's a vibe, it's literally a vibe. Everybody was telling me that Montreal कुछ भी नहीं है, Quebec जाओ. Quebec is, I'm gonna see it tomorrow, but I feel like Montreal is a vibe. अभी वैसे 8:20 हो गया. मैं बस बेड पे अपनी कमर सीधी कर रही हूँ. अगर मेरी कमर में आराम हो गया, सो आई एम गोना गो टू ओल्ड पोर्ट. ओह माय गॉड, आई एम लुकिंग स्टनिंग. हाँ, सो कमर में आराम हो जाता है, देन I can go to Old Port. If not, then I really want to eat something Indian. I'm just craving it so bad. So there's an Indian restaurant nearby, like 600 meters walk. So I'm gonna go there after like 30 minutes. My back is killing me, guys. So even though I don't know when I'm gonna be back in Montreal and we're gonna be able to go to Old Port, my back is killing me, and tomorrow's also a hectic day where I'm gonna be walking all day. So I'm gonna give my back a rest, and hopefully we can visit Montreal again. And it's okay for today. I think I should rest. Rest is more important when your back is killing you.
Oh my god, the food was horrible. Like horrible. अगर मैं मानती हूँ और रेटिंग क्या थी रेस्टोरेंट की 4.7. Who the fuck is giving them 4.7? और मैं मानती हूँ कि चलो कुछ भी तुम ख़राब बना सकते हो, अगर तुम्हारी मिठाइयाँ ख़राब है लाइक गुलाब जामुन एंड ऑल, देन नो, लाइक यू आर द वर्स्ट. एंड इट वॉज टेरेबल. बट शुक्र है मैं सुबह से भूखी थी. अगर मैं भूखी नहीं होती ना तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती और मेरे पैसे वेस्ट जाते. शुक्र है मैं भूखी थी तो मैंने आधा प्लेट खा लिया, आधा मैं छोड़ के आ गई. You know how I was saying that Montreal is a vibe? I think it's more about in which area you live in. अगर मैं डाउनटाउन में अपने उधर टोरंटो में डाउनटाउन में रह रही होती so I would say कि डाउनटाउन अपना बढ़िया है. I live far from downtown and like मेरे आसपास यहाँ पे जैसे क्या मेरे को अच्छा लग रहा है कि आसपास कैफ़ेज़ वगैरह है, वहाँ पे भी है ये सब चीज़ें, बस मैं रहती नहीं हूँ उस एरिया में तो मेरे को इसलिए ऐसा लगा. बढ़िया. To my Airbnb, let me show you the window, and you can see outside like there are cafes and everything. I'm just liking it so much. Also, I'm just gonna take a shower and rest because it's already 10 p.m. and 2-3 दिन से सो नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, and that's why my back is hurting. I have to see a physiotherapist really soon. But I'm gonna take a shower. Okay, bye. Good morning, guys. I just checked out from my hotel. I'm going to the station. Then I have to catch a train. Then I have to catch a bus to Quebec. Yay! I'm in वालमोरीन. मैं बस से उतरी हूँ और अभी बस मैं ऊबर कर रही हूँ जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक की. And yeah, excited. I'm at the ashram. I'm just heading to the reception area. My check-in is at 3 p.m. but I have to go. Hi guys, it's the day 2 of my trip. Yesterday I was in Montreal, today I'm in Quebec. I'm in Valmorin specifically. There's an Hindu ashram, Shivananda ashram, and I'm here. Let me give you a house tour. I think I'm the first one here to like check in and my room was ready. I'm like 5-6 hours early, but that was the only bus timing, so came here early and the room was ready, so I'm lucky. So you come up from the stairs. This is my room. Welcome. Okay, ignore what the mess just I made. These are my bags. This is one bed and this is another bed. I have like towels and everything. This is a chair. That's the window. This is the closet. These are my nails. I can just never get tired of them. This is, you cannot really see, but let me show you from the washroom. This is the washroom. Again, you cannot really see. I'll show you later. So I just wanted to come here and say that this trip, like the yoga and the ashram part of my trip,
is for me specifically, where like I can be present and like I don't have to focus on my work, and like this is kind of the vacation where I'm like just relaxing. So I'm not gonna film a lot in the ashram. Anyways, you have to keep this, maintain the silence. So I'm not gonna film so much, but if I find something interesting, I'm just gonna film it from my phone. But this time, I just want to spend away from my phone, away from my camera, and away from everyone and everything. This is today's 16th, and I am checking out at 11 a.m. on the 19th. So for 2 nights, I just want to relax and be present. And like there are Krishna Mandir here, there's Shivji Bhagwan's Mandir. Like this is a Hindu ashram. So I just want to be present with my God. And I don't want the pressure कि अब मेरे को ये फिल्म करना पड़ेगा. मैं एक बार थोड़ा सा दिखा दूंगी आप लोगों को, but you can just Google it, the ashram, and you can see. So I'm gonna be away from my phone. If I go on any hikes or anything, if I have time, then maybe film a little bit, or if I like, or I'll take a little, or so a little bit of photos, but I'm not gonna film a lot. That's just the idea. And after 19th, I think I'm going to my cousin's house, so maybe I'll continue vlogging from that day. Okay, bye guys. सरस्वती माता की टेम्पल पे ये ट्रेल जाती है. And I'm so tired. Let me show you. So, ये पूरा ऊंचे पे जा रहा है. That's going downhill to the ashram. This is, and trail or hiking means that you have to go uphill. I don't know why I thought it's gonna be easy. You can literally hear me breathing so loudly because I cannot. अभी मैंने नीचे से तो शुरू ही किया है, 2 मिनट भी नहीं हुई है, 15 मिनट की चढ़ाई है. I'm done already. But Mandir closes at 1. Today is the only time I can go. So, भगवान का नाम लेके चढ़ते जाओ. बोलो जयकारा शेरा वाली का, साचे दरबार की जय. एकदम इंडिया वाली फील आ रही है. मंदिरों की चढ़ाई. हाय राम. प्रताप महाजग विद्यावान गुणियति जाता राम काज प्रभुचरित सीता मनमसी सूक्ष्म रूप धरि विकट रूप धरि कंचिया कुबेर हर्ष कुपति प्रिय भरती संभाल. तुम प्रिय भरती संभाल. Okay, I tried to go to Saraswati Trail, but I ended up somewhere else. So now I asked people, where can I go? And they said Mount Kailash Trail. So I'm going there, and it's all jungle. Let me show you. You cannot even see the path. It's all the trees, and I'm literally walking on leaves. So it's like you are guessing where do you have to go. I think this is the Mount Kailash. I don't know. I was thinking it's a mandir or something. But the problem is, I don't know, there are no maps or anything. You cannot do any Google Maps or something.
It just, there's a picture of the trails and you just go if you see any signs. So basically I'm in the middle of the jungle and I don't see anything anywhere. हे बोले बाबा रास्ता दिखाओ किधर जाऊँ मैं. Guys, I'm literally in the middle of the jungle. But they said it's safe from animals and from men. So I'm just looking for any sign to go somewhere. I just don't know where to go now. I even forgot where I came from. So कहीं तो जाना पड़ेगा. Guys, I am at the station. I'm waiting for my bhaiya to come pick me up, and then I think I'm gonna stay here till tomorrow at my bhaiya's place, and then I'm gonna go home. End of the trip. But I'm gonna film from now on. I'm back into my vlogging zone. Good morning guys, I just woke up. It's 9 AM. मैं भैया के घर पे हूँ अभी और बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूरा दिन. So I am debating if I should go somewhere or not, because I'm starting work from day after yesterday and I don't want to get sick. But at the same time, I feel like I'm wasting my day here in Montreal by staying at home. So I'm still thinking about my life choices. But yeah, I'm enjoying it so much. Montreal is a vibe. It's a vibe. I feel like I want to move here. I feel like I belong here. But also अभी मैंने अच्छे से टोरंटो भी एक्सप्लोर नहीं किया. Like I have not lived in downtown, and that's where my heart is. Like in tall buildings and like high-rise buildings and like in the city. इन द डाउनटाउन. सो अभी मैं पहले उधर मूव करूँगी डाउनटाउन. मैंने बताया था कि मेरी नवंबर में लीज एंड हो रही है, एंड डाउनटाउन में रहने के बाद आई विल डिसाइड कि हाँ मेरे को कहाँ एक्चुअल में मूव करना है. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर आई फाइंड अ न्यू जॉब. एंड जॉब मार्केट इज सो क्रेजी राइट नाउ. कितने टाइम से मैं जॉब्स अप्लाई कर रही हूँ बट मेरे को जॉब्स इंटरव्यू तक नहीं आ रहे हैं, एंड इट इज़ क्रेजी. सो I'm just yapping so much, but I'm gonna also wanted to get a coffee or something. तो मैं सोच रही हूँ कि आसपास टिम हॉर्टन्स वगैरह देख लेती हूँ, and I go grab a coffee and then figure out my day. Okay, I'm gonna update you guys if I go somewhere. Be happy. Happy Diwali. Happy Dussehra. Smile. Have light in your heart. Very good, very good. Okay, hold this. So guys, I'm back home and I just realized that I have to text my cousin that I'm home. But anyways,
I'm eating Maggie because that's all the groceries I have. I have to order more stuff. I'll do it tomorrow, but I'm working 7:30 a.m. tomorrow, so I'm watching a vlog. Feeling so relaxed to be home. Don't have to carry that heavy fucking bag now. Back to my normal life. Having so many emotions, but I think I have to sit and journal. Because during this trip, so many times I just wanted to sit and journal and put my thoughts into writing, but I was not getting time to journal. And I think I need some time to journal and like clear my head. But yeah, that's the end of my trip. I am home now and I'm gonna post more and share more. Okay, I don't know what to say, to be honest. Okay, bye. Hi guys, it's way too long since I have come back from my vacation, but I wanted to give you guys the full experience in my words. And the vlog has already officially ended in the last clip, so if you want to skip my talking, my experience, then you guys can. But it was so amazing. We had a schedule where we were waking up at 5:30, taking a shower. Then there was Krishna temple in the ashram. We were going there, 30 minutes meditation and then 30 minutes Sangeet, 30 minutes satsang and kirtan. And then उसके बाद फिर हमारी योगा क्लास होती थी 2 घंटे की. And I was there for 2 nights. And basically 3 days, because first day I checked in very early, so I get to do all these. So yeah, yoga class 2 घंटे की. उसके बाद 10 बजे breakfast, 11 तक breakfast, and then उसके बाद there was this thing, you have to do karma yoga. So karma yoga is like helping, just like you do in Gurdwara की service. So then you do that. उसके बाद तुम्हारे पास free time होता है. एक दिन सोना जाने का हमारे पास टाइम था, एंड देन 1 बजे तक मंदिर खुला था. सो यू हैव टू गो ऑन द ट्रेल्स एंड देन यू कैन फाइंड द मंदिर जाके आई मैं. एक दिन मैं ट्रेल्स पे जाके आई, जो आपने देखा कि मैं गुम हो गई थी. और मैं लिटरली आई वाज प्रेइंग कि प्लीज़ गॉड, भगवान जी, मैं रात को इधर जंगल में नहीं सो सकती, प्लीज़ मुझे नीचे पहुंचा दो किसी तरीके से आश्रम में. it was an experience and I was thinking कि तुम ट्रेल से ऊपर जाके तुम्हें कोई मंदिर मिलेगा. there was nothing. And my phone was about to die and I was like, मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं 4 ट्रेल कर चुकी हूँ और मुझे कोई एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है. एंड चैट जीपीटी वाज लाइक, कोई मंदिर है ही नहीं जो तुम्हें मिलेगा, जस्ट लाइक दैट. तो उसके बाद फिर मैं नीचे आई. एक दिन सोना था, उसके बाद तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है 1-2 घंटे का. देयर वाज लाइब्रेरी, देयर वाज सो मैनी सीनिक स्पॉट्स कि तुम बैठ के जर्नल कर सकते हो, जो तुम्हें मन कर रहा है तुम वो कर सकते हो. एंड आई टुक एडवांटेज एंड आई डिड नॉट गो बैक टू माई रूम टू रेस्ट एंड ऑल. मैं इस आश्रम में जाने से पहले आई हैड सेट दिस इंटेंशन कि मैं जितनी ज़्यादा जाप माला कर सकती हूँ वहाँ आश्रम में जाके, आई एम गोना स्पेंड दैट मच टाइम विद माई गॉड, away from my phone and away from all the responsibilities, job, headache. and यहाँ पे तुम्हें कितना कुछ करना पड़ता है. तुम अकेले रहते हो कि तुम्हें खाने बनाने का सोचना है, तुम्हें बर्तन धोने का सोचना है, तुम्हें क्लीन करने का सोचना. वहाँ पे जाके तो मेरे को इन सब चीज़ों से थोड़ा छुटकारा चाहिए था. दैट वाज माई इंटेंशन. सो आई डिड एज मच job as I can do and as I could do. एंड या उसके बाद फिर तुम्हें
2 घंटे की दोबारा योगा क्लास होती थी ये फ्री टाइम के बाद, एंड देन 6 बजे तुम्हारा डिनर हो जाए। पूरे दिन में सिर्फ 2 बार खाना। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद दैट। फर्स्ट डे आई हेटेड सो मच, क्योंकि इट्स पहली बात तो हेल्दी खाना, लाइक दे वर गिविंग यू हर्बल टीज, एकदम हेल्दी खाना। फर्स्ट डे आई हेटेड इट सो मच। आई एम सो यूज टू हर्बल टीज, आई लव ड्रिंकिंग हर्बल टीज, सो I did not had any problem with that, but with the khana, so much healthy, like vegetables and all, dal and all. फर्स्ट डे मेरे को उन्होंने चावल नहीं दिए, मुझे दाल के साथ सैलड मिला था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गई थी और सिर्फ लेफ्ट ओवर्स बचे थे। लाइक दाल के साथ सैलड मैं कैसे खाऊं, आई कैन नॉट सर्वाइव इन हियर। एंड ऊपर से जब तुम इतने केओस से, जैसे मैंने बताया कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाने के लिए एंड थोड़ा अपने दिमाग को शांति देते हो ना, फर्स्ट डे इट इज़ सो मच केओस इन योर हेड कि इतनी शांति में तुम कैसे आ गए हो, तुम कैसे सर्वाइव करोगे, यू कैन नॉट डू दैट। एंड देयर वाज सो मच जजमेंट अबाउट so many things, and I was literally seeing all the, मेरा पूरा माइंड क्लियर हो रहा था फर्स्ट डे, सो इट वाज वेरी, आई डोंट नो हाउ टू से इट, कि मतलब वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मतलब बहुत कुछ पर्सनल भी है जो आई डोंट वांट टू शेयर एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि तुम्हारा जब तुम केओस से तुम काम में जाते हो, तुम्हें बहुत इरिटेटिंग लगता है फर्स्ट सेकेंड डे, उसके बाद तुम काम डाउन होना शुरू होते हो। तो फिर रात को एडवांस योगा क्लास होती थी, उसके बाद तुम्हें 6 बजे डिनर, एंड देन अगेन द कर्मा योगा के बाद तुम रूम में जाओ, तुम फ्रेशन अप हो, उसके बाद तुम्हें वापस मंदिर जाना है, देन सेम सत्संग एंड मेडिटेशन फॉर 1 hour 1.5 hour again, just like in the morning, and then it repeats the next day. So it was amazing. It was super amazing, and I went off season, so it was really good, क्योंकि मेरे को सस्ते में मेरे को 2 nights का $270 पे करना पड़ा था, excluding taxes. No, I think including taxes for stay, accommodation and food and everything. So it was really good. If you want to check out Shivananda Ashram, you guys can do that. It's everywhere, but I think Toronto वाला बहुत ज़्यादा expensive है। And but तुम क्यूबैक, अगर तुम टोरंटो रहते हो, क्यूबैक ट्रैवल करना तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स है, तो तुम इससे बढ़िया टोरंटो वाले में चले जाओ। बट या इट्स रियली गुड।